YouTube channel. Today we are starting with chapter 15, that is the coastal plains and islands. The very first thing that you should know is a coast is the island besides or near the sea or the ocean. See, जब भी हम किसी भी एक सी की बात करते हैं तो सी का एक शोर होता है, एक किनारा होता है, और वो किनारा कहाँ तक चलता है उसको हम कोस्ट बोलते हैं. नाउ यू ऑल मस्ट बी वॉन्डरिंग वाई इज़ मैम यूजिंग हिंदी हेयर. सो टुडे ऑनवर्ड्स बेटा, हम जो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी, आई विल यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस एज आई हैव गॉट सम गुड कमेंट्स दैट आई शुड यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस इन माई यूट्यूब चैनल. So, as I told you, coast is an area near or beside the sea. Okay? And if we talk about India, the length of Indian coastline is about 7,000 kilometers. And India has a beautiful coastline. And ये coastline जो है कहाँ stretch होती है? In the Indian Peninsula. Now, Indian Peninsula, I hope you remember what is a peninsula. Now, you have to promise, if you are watching this video, you will write in the comment box that what is a peninsula. I will give you an idea. It is somehow something triangular in shape. So, the Indian coastline that is divided into the western coastal plains and the eastern coastal plain. Now, as the word indicates, the western coastal plain, ये कहाँ पे होंगे हमारे? To the in the west of India, and eastern coastal plain कहाँ होंगे? To the east of India. Now, the western coastal plains, they lie between the Arabian Sea and the Western Ghat. I hope you remember कि लास्ट चैप्टर में हमने ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की बात की थी. तो जो वेस्टर्न घाट आता है गुजरात वाले एरिया में, एंड द अरेबियन सी, गुजरात की साइड में जो सी है दैट इज़ अरेबियन सी, उन दोनों के बीच में जो एरिया है दैट इज़ योर वेस्टर्न कोस्ट. The western coastal plains are divided into 3 parts. Now comes the important part. Now these 3 parts are Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. Now you can see the image that I am sharing. Can you see Gujarat coast? It is a green shade there, Gujarat coast, and it stretches from Gulf of Kutch to the Gulf of Khambat. Now again a new word is Gulf. अब Gulf क्या होता है? It is an inlet of the sea. एक ऐसा एरिया जहाँ पे समुद्र जो है वो लैंड के साथ टच होता है, और वो कोस्टल एरिया जहाँ जो पानी और लैंड को सराउंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? गल्फ. दैट इज़ कॉल्ड गल्फ. नाउ गल्फ एक ऐसा एरिया होता है दैट इज़ सॉल्टी. जो सॉल्टी वाटर होता है, जब हाई टाइड्स आती है तो वहाँ पे वाटर आता है, जैसा कि गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में आपने सुना भी होगा. You have some patience. I will show you Gulf of Kutch in the next slide. But here, can you see the Gulf of Kutch? It is in the Gujarat coast. And one more very important thing, it is the broadest coastline. You can see it is the broad area that is in green color here. And after that comes your Konkan coast. Now Konkan coast, it starts from Konkan and reaches to the Goa, and it is thin. It is thin and thin, or you can say narrow in comparison to the Gulf coast. Now this coastline is rocky. It is rocky and it is narrow and uneven. Now rocky is there. So have you heard the name of lighthouse? Lighthouses are there. They are used in the seashores. With seashore, from now onwards it should be clear in your mind कि वो वाला सी शोर जहाँ पे रॉकी एरिया होता है. अब वाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस का क्या काम होता है? ताकि रात में जो यहाँ दूर से जहाज़ आ रहे हैं, इधर लाइट ऑन होती है रात को और वो रोटेट करती है, और जो भी शिप वगैरह यहाँ से पास होते हैं उनको ये रास्ता दिखाती है ताकि ये शिप वगैरह जो है वो कोस्ट लाइन से टकरा ना जाए बिकॉज ऑफ दिस रॉकी माउंटेन्स.
And next comes your Konkan coast. Now Konkan coast, you can see it after Konkan coast has rich petroleum and oil wells. And next comes your Malabar coast. Now Malabar coast, that stretches to the Kanyakumari, and it has lagoons. I will show you. Firstly, you see this in this map of India, it is a map of Gujarat actually, and you can see Gulf of Kutch. Are you able to see? If you are able to see, then write in the comment box yes. Gulf of Kutch, it is the area of the sea that is invading the land. And here you can see Gulf of Khambat. Gulf of Khambat is also there. Now this should be clear what is Gulf of Kutch and what is Gulf of Khambat. Next comes the south of the Gujarat coast is the Konkan coast that I told you, it extends to the Goa, and lighthouses are there. See, this is the image of an lighthouse. Now one more question to you. Oh, it's written here. Next is the Malabar coast. Now the Malabar coast, it lies to the south, and what is the speciality of Malabar coast? That a number of lagoons or backwaters are formed along this coast. Now what is a lagoon? Can you see when sea water, it rushes toward the land and it comes back. Some part of the water, it stays in the land, and a lake shaped structure is formed. As you can see, the Chilka Lake, it is also a lagoon. It is actually a lagoon. You can see in this map that the area Bay of Bengal, from here water comes to the Chilka Lake and it forms a lagoon. It is a salt water lake. Next comes here the eastern coastal plains. The eastern coastal plains, they lie between the Bay of Bengal and Eastern Ghat. Their start point is Ganga Delta in the west, and again in the comment box you will be writing what is the name of that Ganga Delta. जो गंगा एक डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है बेटा. And it ends in the Kanyakumari. Next, the eastern coastal plain, they are also divided into two parts, the northern Sircars and Coromandel coast. I will show you, wait. Yes, in this map you can see northern Sircars and Carnatic plains, Coromandel coast. See, you go along with me, you can see Chilka Lake, and after that northern Sircars, Andhra coast, and Pulkit Lake. Again, now you tell me, is Pulkit Lake a lagoon or a normal lake? You will tell me. And Coromandel coast. And next topic comes the island. Now island or isle is a piece of subcontinental land that is surrounded by water. एक ऐसा piece of land जिसके आगे पीछे water होता है, उसको हम island बोलते हैं. Usually oceans या seas में पाए जाते हैं. अब इंडियन पेनिनसुला में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड पाए जाते हैं. एक आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दूसरा आता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड. एंड अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात कर सके, ये एक्चुअली ये कहाँ पे सिचुएटेड है? टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. एंड ये ग्रुप है, इट्स नॉट अ सिंगल आइलैंड, ये ग्रुप है 300 आइलैंड्स का. और इनकी कैपिटल जो है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर. और ये जो आइलैंड्स है, दे आर हिली कवर्ड विद फॉरेस्ट, और इनमें से कुछ ही आइलैंड जो है वो इनहैबिटेड है. नाउ व्हाट इज़ इनहैबिटेड? ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन की इन्वेजन है, ह्यूमंस रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहैबिटेड. और 38 नॉन आइलैंड्स है अंडमान निकोबार में जहाँ पे लोग रहते हैं. और बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी. नाउ कैन यू सी द डिफरेंस? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस तरफ? बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स ईस्ट, एंड लक्षद्वीप आइलैंड टुवर्ड्स वेस्ट. और कौन सा सी आता है? अरेबियन सी. एंड ये जो है
36 नंबर है इन आइलैंड के, और इनकी कैपिटल जो है वो क्या है, कारावती। ठीक है, और इनमें से भी सिर्फ 11 ऐसे आइलैंड है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, सी दिस इज़ द इमेज ऑफ एन आइलैंड। ऐसा दिखता है आइलैंड, ऐसा होता है आइलैंड। सेंटर में एक लैंड का पीस होता है और इसके आगे पीछे जो है यू कैन सी इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर एवरीवेयर। Next comes climate. The coastal plains, they have moderate climate. The days are warm and nights are humid. Now days जो है वो warm होते हैं और humid होते हैं because land breeze चलती है, and night में night जो है वो cool होती है क्योंकि sea breeze blow करती है। ठीक है, with this chapter comes to an end. I hope you have